against Aryan Khan, and he, क्यों उनको चार्जशीट में नहीं शामिल किया गया? उनके खिलाफ सफिशेंट एविडेंस प्रमाण नहीं हमें मिले। हमने उनको ये हमारे फाइंडिंग में उनके खिलाफ सफिशेंट एविडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे। शुरुआती जांच में ऐसा बोला गया था कि जो मेन 6 ही नाम आ रहे थे, जिसमें आर्यन खान का भी नाम था। फिर जब दूसरी टीम ने जांच शुरू की, उसके बाद से जो जांच का जो दिशा है वो बदल गई अचानक से, और ये कहा जाने लगा कि आर्यन खान का इसमें रोल नज़र नहीं आता। तो चार्जशीट क्या वही रिफ्लेक्ट कर रही है जो बाद में दूसरी टीम जांच कर रही थी, जो सामने आ रहा था? हमारी इन्वेस्टिगेशन जो रही, SIT, आपको ये पता होगा कि 6 नवंबर 2021 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और हमारी जो जांच रही है बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच रही है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हमने काम किया है। और हमने जो प्रिंसिपल एक होता है टच स्टोन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसको अप्लाई किया है, और इस टच स्टोन पे हमने ये पाया है कि 6 लोगों के खिलाफ हमें सफिशेंट एविडेंस और प्रमाण नहीं है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि हम इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। बाकी के जो 14 लोग हैं उन पे किस तरह के चार्जेस हैं जो चार्जशीट फाइल की गई? उनमें से 14 में से 13 लोगों के खिलाफ पास से ड्रग की रिकवरी हुई है। एक है उनके खिलाफ, उनसे ड्रग की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास उनके खिलाफ और भी प्रमाण हैं जो कि ये साबित करते हैं कि उन्होंने ड्रग प्रोक्योर कराया। उन्होंने एक जो ड्रग पेडलर है उनसे ड्रग लिया और अपने दोस्तों को ड्रग अवेलेबल कराया। तो ये इन 14 के खिलाफ हमें ठोस सबूत मिले हैं और उनके खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। यानी ये कहा जाए कि आर्यन खान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है इस चार्जशीट के अकॉर्डिंग? जी। मैं इस में क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि बिगिनिंग में ही उनके पास जिस दोस्त के पास चरस मिली थी, उनके बयान में साफ साफ ये आया है, उनके इनिशियल बयान में साफ साफ आया है कि वो ड्रग आर्यन खान के लिए नहीं था। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आर्यन खान ने उन्होंने मना किया था कि ड्रग कैरी नहीं करें, NCB एक्टिव है। तो इनिशियल स्टेज में ही इट वाज वेरी क्लियर दैट ड्रग जो पाया गया उनके दोस्त के पास है वो उनके लिए नहीं था। और जो व्हाट्सएप चैट की बात की जा रही है, मैं उसमें एक और आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो व्हाट्सएप वो मैंने जो व्हाट्सएप चैट जो उनका व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन खोला गया, वो भी उसमें भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, वो पूरी नहीं की गई। बहरहाल जो व्हाट्सएप चैट भी जो भी एक्सट्रैक्ट किया गया, वो भी ये चैट्स इस केस से आर्यन खान को लिंक नहीं करते। तो हमने ये तीसरा उन पे एक चार्ज लगाया जा रहा था कंजम्पशन का। कंजम्पशन को प्रूव करने के लिए सबसे बड़े प्रमाण की ज़रूरत होती है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की। मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया इसमें। तो ये 3 जो बड़े हमारे पास जो हमने जांच के दौरान ये देखा कि ये 3 चीज़ें, इन 3 चीज़ों पे कोई भी प्रमाण हमें आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिला। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। यानी ये कहा जाए कि शुरुआत में जो टीम जांच कर रही थी समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई, वो टीम उसने इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं लूप होल सामने आए, कुछ त्रुटियां सामने आई हैं और उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड पे लिया है। और हमारे DG NCB साहब ने एक निर्णय लिया है कि ये त्रुटियां रही हैं, उनको जो हमारी टीम है स्पेशल इंक्वायरी टीम जो विजिलेंस मैटर को देख रही है, वो इन त्रुटियों को देखेगी कि इनका क्या संबंध हो सकता है जो अन्य
जो अनियमितताएं सामने आई थी, उनका इन त्रुटियों से क्या संबंध है, उसको आगे जांच में शामिल किया जाएगा। वो लोग करेंगे, उसकी जांच करेंगे। स्पेशल इंक्वायरी टीम इसकी जांच करेगी। देखिए, संजय सिंह का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस एनसीबी को नहीं मिले। तंसीम हैदर। Big story breaking at this hour. Shivarud continues to be with us. Here we have Sanjay Singh, the deputy DG, who's the signatory shave of that press release, saying that there is going to be a special inquiry team looking into the faults of what the first probe team essentially did vis-a-vis the loopholes. Medical investigation was not carried out. Why were these lapses? This is going to be looked into clearly. Sneha, you asking me? Yes, Shiv. Yeah, Sneha. So, apologies for that. This is, in my view, the most damning admission that could possibly ever have been made at this point of time. What the Deputy Director General of the Narco Bureau has just admitted to India Today's Tanseem Haider is that they have trashed Sameer Wankhede's probe. They've not only called it an error, but the very foundation of this entire investigation is now deemed to be faulty by the Narcotics Control Bureau. There is no escape route. The Narcotics Control Bureau has clearly realized that they can't sugarcoat the truth, and therefore it is best to just own the fact that the first part of this investigation was embarrassingly faulty. The reasons for it are going to be separately part of an investigation where more truths will come out, but for this Deputy DG of the Narcotics Control Bureau, Sneha, to basically say that there were errors conducted as far as the medical tests were concerned, as far as the raids were concerned, as far as the recoveries were concerned, is the most explosive reveal. And it is first and exclusive on India Today. Basically what they're saying is, look, we messed up. The first part of the probe, which was basically the foundation, the very justification for the arrest of Aryan Khan and keeping him behind bars for 22 full days, that entire action and activity led by zonal officer of the time, Sameer Wankhede, is seen to be contaminated, questionable, broken, damaged, unjustifiable, and therefore dubious and dodgy. And yes, the fact is, saying it is one thing, but now clarifying on what action they will take going forward is going to be something completely else. And let's not even get into the fact, Sneha, of what this says about the Narcotics Control Bureau actions in other cases. We'll come to that later. Let's focus right now on Aryan Khan. Yes, absolutely. Because this case got so much spotlight, and obviously it would, given that he's the son of a superstar. Shiv, the other two things that he said was that the WhatsApp conversations clearly had no links with Aryan Khan. The second piece of information that he's given to India Today was that in the initial stage itself, it was clear that the drug was not meant for Aryan Khan. So two things are very clear. The third one, of course, is that there was no medical examination done. So there was no proof that he consumed the narcotics. That's right. The nuts and bolts of this confession by the Narcotics Control Bureau, my sense, Sneha, is it's going to become more damning and more explosive the more detailed we get into it. And that's the reason why the press conference by the Narcotics Control Bureau is much awaited, because the journalists who are going to be there, I can speak for India Today's journalists because they're the best and they've covered this story in a factual and clinical way. But the questions we are going to ask, I'm afraid they're going to have some very, very uncomfortable answers. The questions that you asked just now, the WhatsApp chats as well, the presence of that dubious so-called private investigator / whistleblower, the bald guy who had that photograph with Aryan Khan, that angle is going to be, highly questionable. The presence of other persons is going to be questionable. The fact that certain leaks were taking place in a selective manner is going to be hugely questionable because of the manner in which it may have, swung the investigation. And let's always remember what is at the core of what's happening here, Sneha. And the core is simply this. It is that the information, the
activities that were part of this investigation, from the medical test to the recoveries to the claimed, recoveries to the raids, etc., those were used as legal justifications to demand the detention and arrest of Aryan Khan. And if there were errors in those procedures, those due procedures by the Narcotics Control Bureau, then this goes beyond dereliction of duty. It goes beyond, someone sleeping on the job or, conniving with the, other agencies to actually make this happen. This could actually be deemed to be a crime by this agency. Now, we're not going to go ahead and say that, obviously, because only a court can say that. An internal inquiry will have to bring those facts out. But I'm just highlighting the seriousness of the questions here. This is no longer just about Aryan Khan or Shah Rukh Khan or Sameer Wankhede. This is about a country that for 26 days last year was seen by many to be some sort of a banana republic, where law of the land was given short shrift, where a celebrity soft target was seen to be hounded by an agency with some evidence and mostly questionable information that was leaked to the media. And therefore, these questions are going to have to be asked at this time. So therefore... Yes. Be with us, Shiv. In fact, we are going straight to what Sameer Wankhede told India Today just a few minutes ago. Of course, error by the first probe team is what has been said by the NCB now. What did Sameer Wankhede then tell us? Listen in. समीर वानखेड़े जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। आर्यन को उसमें क्लीन चिट देने की बात कही जा रही है, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। क्या कहना है आपका? आपने पूरा मामला देखा था। सॉरी, मुझे कुछ नहीं कहना है। नो मोर इन एनसीबी, प्लीज हैव द रिस्पेक्ट ऑफ। समीर वानखेड़े जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन जो एविडेंस आधार पर जो पोजीशन था या स्ट्रॉन्ग एविडेंस था, उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है, और जिनके खिलाफ एविडेंस बना नहीं, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई। आर्यन खान के खिलाफ क्या कोई चार्जशीट दाखिल हुई है या नहीं? किसी व्यक्ति विशेष पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपको बता दिया कि 14 लोगों पर चार्जशीट हुआ, 6 पर नहीं हुआ। मतलब जैसे वो 6 लोग किस तरह से, अगर आप बता, 6 लोग कौन है, उनके नाम अगर आप... नाम मैं नहीं बता सकता। नाम आप लोग कोर्ट से ले सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है और ये प्राप्त हो सकता है। सर, लेकिन जैसे पहले की बात आई थी कि कई लोगों को जिनको भी आपने पकड़ा था, उनके खिलाफ पूरे सबूत थे, पेडलर से संपर्क होने की जानकारी थी, तो वैसे में 6 लोग के खिलाफ क्यों सबूत नहीं बन पाए? उस पर आप कुछ बता पाएं? सबूत होता है, फिजिकल सबूत होता है, या तो पोजीशन आपके पास मिलता है, आपके पोजीशन में ड्रग्स मिलता है, या आपके कहने पर, आपकी बात पर जो है ड्रग्स किसी और के पास मिलता है, या रिकवरी होती है, आपके प्रीमाइसेस में रिकवरी होती है, तो यही सब सबूत कहलाते हैं। लेकिन जब इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं होता है तो हम लोग मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते। तो जो कारगर कार्रवाई होती है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन का यह एक उसूल है। तो इसी उसूल पर हम लोग कायम रहे, और लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार पर एसआईटी का गठन करना पड़ा, और वहाँ के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन अभी जो फोकस है वो इस कांड के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने, एनसीबी ने 20 में से 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है और 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। चार्जशीट दाखिल करने के पीछे कारण ये है कि 14 लोगों पर ठोस सबूत मिले, अर्थात ठोस सबूत का मतलब है फिजिकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोरोबोरेटिंग फिजिकल एविडेंस, और साथ ही उन लोगों पर जिन पर चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी, उसमें जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था उसमें कुछ कमियां थीं, और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। इसके पीछे एक ही सिद्धांत को माना गया, और वह सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार दोहराया है। वह प्रिंसिपल है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अगर रीजनेबल डाउट कहीं है तो उसके बियॉन्ड होना चाहिए, तभी सबूत को कारगर माना जाएगा। और ऐसा अक्सर माना जाता है, कभी कभी गलती से माना जाता है कि एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्ट है कि अंदाज पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने कई बार कहा है कि अंदाज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्ट ज़रूर है, लेकिन प्रिंसिपल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का ही मान्य होगा,
और उसी के आधार पर 14 लोगों पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम लोगों ने एविडेंस पाया, 6 लोगों पर एविडेंस नहीं पाया। इसलिए 14 लोगों पर चार्जशीट आज कर दिया गया है और 6 पर चार्जशीट नहीं किया जा सका। अंततः मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एसआईटी ने बहुत प्रोफेशनल वे में इस पर काम किया। इसके लिए एसआईटी की पूरी टीम संजय सिंह साहब के अंडर में बधाई का पात्र है और उन्होंने एक ही कसौटी माना कि जहां एविडेंस मिला उस पर कार्रवाई हो, जहां एविडेंस नहीं मिला उस पर चार्जशीट ना हो। और अंततः जो कोर्ट माननीय न्यायालय से हम लोगों ने समय मांगा था वो पूरी डिटेल जाने के लिए मांगा था। हमारे पास डिजिटल एविडेंस भी था जिसमें बहुत सारे डिजिटल एविडेंस का हवाला दिया गया था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में। उस सब की जांच की गई, सब तरह से हम लोगों ने तहकीकात की और अंततः इस पर उपनीत हुए कि 14 लोग इसमें चार्जशीट के पात्र हैं, 6 नहीं। धन्यवाद। सर, आर्यन खान करीबन 22 दिन से ज्यादा जेल में रहे सर, उनको बड़ी अदालत से राहत मिली थी सर। ये कहा गया उनके खिलाफ एनसीबी ने लगातार लोअर कोर्ट में कि वो एक लार्ज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सर, जो टीम के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे करप्शन पे, आपने उनके ऊपर नीचे लेवल पर एक्शन लिया, लेकिन जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके ऊपर क्या कोई एक्शन हो रहा है सर, जिनकी निगरानी में पूरी जांच चल रही है? समीर वानखेड़े सर, अभी जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। Sir, Aryan Khan was a prominent name who was also arrested. Are you ready for any kind of scrutiny before the court also? Because there will be several doubts which will be raised on social media and through due course of time. Is the NCB totally prepared to answer questions of the court when the arrest of Aryan Khan will be questioned? It is obvious that we are open to scrutiny. NCB, that is why we, as an organization, took it upon us as our responsibility to take over the case, which was becoming controversial, and it was the NCB's reputation at stake. So we took over the case. We did a professional investigation, and we have come to the conclusion we are open to all scrutiny, and obviously since the charge sheet has been filed, it will be scrutinized from the judicial point of view. सर, इस मामले में क्या शाहरुख खान से भी पूछताछ की आप लोगों ने दिल्ली हेडक्वार्टर में, मुंबई में? ये जो है जो प्रक्रिया जो एसआईटी के इतर एक एसईटी स्पेशल इंक्वायरी टीम ने किया था, जो कि विजिलेंस के इश्यूज पर इंक्वायरी की थी, वो दूसरे डीडीजी के मार्गदर्शन में हुआ था। उसमें जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ उनसे पूछताछ की गई। अब किस किस के साथ पूछताछ की गई वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी कंसर्न थे उनके साथ पूछताछ की गई, क्योंकि जो भी चार्ज आया था विजिलेंस का, जो भी मामला आया था, वो जिससे भी जुड़ा हुआ है सबसे पूछताछ की गई। सर, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेंगे सर इसमें? देखिए, कांड का एक उसूल होता है कि कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें चार्जशीट जो है समय रहते की जाती है। तो हमारा समय सीमा आज का था, तो आज के डेट तक चार्जशीट की गई। अगर सप्लीमेंट्री एविडेंस या कोई और नया एविडेंस सामने आता है तो सप्लीमेंट्री। And now I'm going to play for you the most explosive interview that's come in so far. You've heard the Director General of the Narcotics Control Bureau. Now I'm going to make you hear what the Deputy Director General of the Narcotics Control Bureau, Sanjay Kumar, has said. It is the most candid statement that you're going to hear, viewers, so far on this breaking story. Here you have the Narcotics Control Bureau for the first time admit that they messed up and that the first probe was totally broken and damaged and errors took place. Take a look, listen very carefully to this big exclusive. हमारे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद हमने आउट ऑफ 20 लोग जिनको हमने अरेस्ट किया था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, उनमें से 20 में से हमने 14 लोगों के खिलाफ हमने प्रमाण हमारे पास प्रमाण है और उनके खिलाफ हम चार्जशीट कर रहे हैं। बाकी 6 लोगों के खिलाफ हम चार्जशीट नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सबूत नहीं है।
जो 6 लोग हैं उनमें आर्यन खान का भी नाम है, तो क्या माना जाए कि चार्जशीट में या उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले, क्यों उनको चार्जशीट में नहीं शामिल किया गया? उनके खिलाफ सफिशेंट एविडेंस प्रमाण नहीं हमें मिले। हमने उनको ये हमारे फाइंडिंग में उनके खिलाफ सफिशेंट एविडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं, उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे हैं। शुरुआती जांच में ऐसा बोला गया था कि जो मेन 6 ही नाम आ रहे थे, जिसमें आर्यन खान का भी नाम था। फिर जब दूसरी टीम ने जांच शुरू की उसके बाद से जो जांच का जो दिशा है वो बदल गई अचानक से, और ये कहा जाने लगा कि आर्यन खान का इसमें रोल नज़र नहीं आता। तो चार्जशीट क्या वही रिफ्लेक्ट कर रही है जो बाद में दूसरी टीम जाँच कर रही थी, जो सामने आ रहा था? हमारी इन्वेस्टिगेशन जो रही SIT, आपको ये पता होगा कि 6 नवंबर 2021 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, और हमारी जो जांच रही है बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच रही है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हमने काम किया है। और हमने जो प्रिंसिपल एक होता है टच स्टोन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसको अप्लाई किया है, और इस टच स्टोन पे हमने ये पाया है कि 6 लोगों के खिलाफ हमें सफिशेंट एविडेंस और प्रमाण नहीं है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि हम इनके खिलाफ complaint file nahi The most prominent voices here on India Today on this big news break. Nasir Abdullah, well-known actor, theatre personality, and one of the most prominent voices during the media coverage of this entire spectacle last year, is live with us. Nasir, good to see you. Thank you very much for being with us here. Your opening comments on these developments, Nasir. A clean chit to Aryan Khan. You'd been one of the most vocal on this entire issue last year. Go ahead, sir. Yeah, initially it seemed like these guys had a case. But as the days went on, it became apparent that it was becoming more of a witch hunt. And the idea was to demean and to shame and humiliate a person who is related to another person, maybe. Then came the fact that both these men, Mr. Wankhede and Mr. Gosavi, are actually very dicey people. Mr. Gosavi is in jail right now for many cases of the cheating. Mr. Wankhede has a problem too. He has a criminal case against him for forging documents about being from the SC, whatever, the class. He had used false certificates, and it all became such a crazy looking stuff that it all got exposed. And then there was extortion. And this was really seen as a kind of a kidnapping case. So it became apparent that Mr. Wankhede was not a Hanumanji who was out to destroy the city of Lanka. He was himself a part of the conspiracy to accumulate wealth and to extort money, which was to be shared, and the money went obviously into crores. And it is obvious now, we see no sign of Mr. Wankhede or Mr. Gosavi. It is amazing. It is really crazy. So what I can see is there was super confidence on the part of these guys. They knew what they had to do. They didn't care a hang. They didn't care a hang for the law, because they just wanted to get their end of the deal, which was also money and accolades, etc., etc. And now it is proved beyond a reasonable doubt that the existing gentleman, Mr. Sanjay Singh, has voiced his exact opinion on the case. He's now in charge. And he has said, we didn't find anything. Obviously, there wasn't much. And I'm amazed that they were allowed to go so far. And the Gosavi guy was like one James Bond holding on to a gun with a gold chain around him, some kind of a stud, crazy stuff. I was amazed that all this was happening, and everybody was, really hogging it up. It was almost like a similar thing that happened during the Sushant Singh case. Of course, that was still another story, but I am relieved to know that this did not lead to what it was leading up to. A case of kidnapping, extortion, humiliating, etc., and nothing to do with the elimination of the drugs and all that. That's a lot of rubbish that was never there, in this case Nasir, at least.
during the coverage of this entire case last year, you and I both remember how there were, these daily installments that came in from the Narcotics Control Bureau in the form of leaks, whether it was WhatsApp messages, whether it was pictures, whether it was, selective documents, pictures of all kinds. We've spoken to, all the lawyers involved, including Mukul Rohatgi, the lawyer for the Shah Rukh family, who says, we'd like to move on from this. We don't have anything more to say. Obviously, that's understandable. After the trauma of what happened, they'd like to move on. But, given how many millions were invested in this entire case, do you think the Narcotics Control Bureau, Nasir, owes a much more detailed explanation of, the manner in which things happened last year? They've gone ahead and admitted on a record that errors happened, but it can't just be a 3-paragraph, a clean chit. There has to be more detail, doesn't there? Yes, Mr. Sawant, I am glad you brought this up because it makes me think of another, a point when they were insisting that the bail should be refused to Aryan. They were saying that he's a part of a big cartel of drug import and dealing. That was the worst thing you could ever say to a boy who happens to be the son of one of the richest actors in the world. So why would this foolish boy go in for dealing in drugs when whatever he wants is anyway available to him? That was the worst charge, and I defended it with my gut feeling. I said, this is impossible. If I go into drugs, if I'm a part of the cartel, it is possible. It is impossible for Shah Rukh Khan's son, who's got everything, to go into such a dark and dingy lane to be a part of the cartel, drug cartel. You are looking at the Colombian drug guys and all these Barbosas and Dardozas. Amazing. This was the lies they used to influence the courts to refuse him and to prolong the suffering for this little guy who had very little to do with the situation. Imagine, drug cartel. So that was very wrong. And I think there should be an apology. I don't mind if there is no investigation, but Mr. Wankhede and his associate were extremely derelict, non-compromising, using illegal means. They did all the wrong things with the super confidence. Obviously, they had the backing of some people in the government or whatever, because it's from the central agency. It was very wrong, and all sorts of lies were used. And he was made to look like some huge demon who was dealing in drugs. Terrible stuff. I was amazed and shocked. And now I'm relieved to know that all this is away and lies buried. Mr. Nasir Abdullah, thank you so much for joining us and sharing our views with us on that story that we are looking at very closely. I'm going to go across to Mustafa, who's getting us more on that. Mustafa, questions obviously will be raised now on what sort of action is going to be taken against Sameer Wankhede and the first probe team, given that the NCB has come out and said that yes, there were errors, there were big loopholes. Medical examination on Aryan Khan not done. Also, the WhatsApp conversations that were leaked to the press time and again did not have any link with Aryan Khan. Those who've been charge sheeted have said that the charas, the narcotics there, was not meant for Aryan Khan to begin with. Well, of course, and yes, there are a lot of questions to be asked, and NCB has clearly said that there will be inquiry and action taken. In fact, one of the inquiries by the Vigilance Committee has already transferred two superintendents from the NCB Mumbai to other parts. One of the superintendent is V.V. Singh, who is the investigating officer of the Aryan Khan case. So yes, the NCB had an idea of what had happened, and that's why, the Sameer Wankhede's tenure after December 2021 was not extended in the NCB. So they had an idea what has happened, and this is not the only one case.
there are a lot of cases which are with the SIT, and SIT is investigating and will have to file charge sheet in these cases. And there are many other allegations which have been made, allegation of extortion which was made by SRK's manager Pooja Dadlani from people who were with Aryan Khan inside the NCB office. So there are a lot of things which are out in open, and their inquiry will be done. But how soon that happens and what action will be taken is something with the NCB has to decide. But they have come out and clearly said that there was no evidence against Aryan Khan, and there is no evidence against Aryan Khan. Not after this 240 days of investigation, there was no evidence against Aryan Khan from the first day while he was brought to the NCB office. The statements were clear, and he was not under possession of any drugs and things like that. So this is now very much clear and out in open. We'll be waiting for the NCB what they decide and what the investigation says about the officers who are at that point of time investigating the case. Mustafa, do continue to be with us. I'll come back to you and to my other colleagues in a bit from now. We're continuing to keep a close eye on that big development from today, where the Narcotics Control Bureau has come out and said there was no proof against Aryan Khan, and hence the charge sheet does not have his name. A clean chit to Shah Rukh Khan's son there. It's time for a quick break here. News continues in just a minute.